All right. So, Happy New Year once again to all of you. And I hope year 2021 brings a lot of happiness, joy, prosperity, and good health to all of you. We will start very, very shortly. And I will share my screen. And in 15 minutes, I think the session will be done. Very small presentation, very to the point topic. Single biggest factor for MFD's growth. The single biggest factor in MFD's growth. And this presentation I will share with you today. Okay. So I also want you to answer me in the chat box whenever I ask any question as quickly as possible so that we will try to identify. So in your opinion, before I start, give me some answer. What is the single biggest factor in MFD's growth? In the chat box, very quickly. What do you think? Very quickly. Integrity, yes, it is. Who else? AUM, okay, yes, it is. SIP book, SIP, yes, it is. Focus, yes. Prospect meets. Meeting is extremely, extremely important. SIP is extremely important. I will not give you any answer right now because all what you're talking is making so much sense, and the answer is one of these things. Reference, MFD himself, good service, knowledge of product, trust, retaining clients. Fantastic answers, fantastic answers. Mindset, client meetings, customer satisfaction and trail, passion, clients, client meeting, interaction, integrity, SIP book, knowledge, always customer first, service, positioning clients, understanding the client, patience, customer acquisition, good bonding with clients. Fantastic. I can't disagree with any of you. All these are so important in the mutual fund distribution business. सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसकी बात हम लोग आज करने वाले हैं और आप सबने जबरदस्त आंसर्स दिए हैं और ये मेरा अपना एक व्यू है जो मैं आज आपको देने वाला हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बाकी पॉइंट्स कमजोर हैं या गलत हैं, सारे के सारे जरूरी हैं. मगर इनमें से अगर मुझे कोई एक चूज करना हो तो मैं क्या चूज करूंगा, मैं आपको अपना आंसर देना चाहता हूं. So, are returns the most important, biggest factor in MFD's growth? What do you think? Yes or no? Is return? Yes, no, myself, no, no, no. So many of you are saying no. So my answer is also no. Return is not the biggest factor in MFD's growth. So that's eliminated. So what is the biggest factor? Salesmanship. Tell me, is salesmanship the biggest factor in the MFD's growth or not? Oh, Mr. Sivaram is saying yes, sales it is. Other people are saying no, no, no. All right, yes, another yes, 30% yes, no. So it's a mixed bag, salesmanship. All right, so salesmanship, my dear friends, is very important, but it is not the single biggest factor in MFD's growth. What else? Okay, let's talk about knowledge. What do you think? In my opinion, knowledge is important. But again, my dear friend, please don't misunderstand me. And I will come back to you very shortly in terms of the biggest single factor. But knowledge is not the biggest single factor in our business. You know so many mutual fund distributors, काफी distributors हैं जिनके पास जबरदस्त knowledge है लेकिन उनका AUM बड़ा नहीं है, business बहुत successful नहीं है. Knowledge होना जरूरी है मगर it's not the biggest factor. Integrity. Now this is very debatable and please don't misunderstand me. Integrity is the thing, most important thing, very important thing, but not the biggest thing in the growth of mutual fund distributors. There are so many mutual fund distributors who work with absolute integrity. They put clients first, but still it is not the biggest single factor in MFD's growth. Please don't stop me by saying that integrity is very, very important. But all I want to tell you is that it is not the biggest thing. And many of you have written, right now I can see on the chat box, manage client behavior. Yes, it is, but it is again not the biggest single factor in MFD's growth. So I think by now you all know that if these are not the single biggest factor, then what it is which will make you
one of the largest mutual fund distributors, the best mutual fund distributors having largest AUM in the country. You must be very, very anxious to know about this. Then what if these are not the top 5 things, top things that you have to do? So returns are not very important. Salesmanship is not very important. Integrity is important, but not the biggest factor. Knowledge is important, but not the biggest factor. Managing client behavior, we talk so many times that we have to manage clients' behavior, but if it is not the biggest factor, then what is the biggest factor, which if you focus, you will become one of the fastest growing and long-term mutual fund distributor with success. And before I give you that word, that message, I want to tell you that many of you are doing it. The only aspect I want to talk about is how you have to do this. And it's a combination of so many things that we have to do to become successful. But today I chose one single thing over everything else. And it is my story. It is story of so many other distributors in the country who have focused into this one thing, and this has allowed them to grow. And so I will give you now my secret sauce of this session, the biggest thing, and then I will explain you why I say that. So please don't go away. I will explain you why I'm talking about this, which is the single biggest thing. And here is the answer. My answer is handling client queries. Now, many of you will be surprised, but I will explain you what I mean by this. My answer is that the single biggest factor in a mutual fund distribution business is how you handle client queries, how fast you are, how efficient you are. And I will give you various examples and how it affects our business. Everything else is secondary. Everything else is secondary. How you handle client queries is very, very essential. And while you are giving quality services, and again, clients queries also means client servicing. Client servicing. I have seen in my 20 years of mutual fund distribution, this is the one factor which has made us the largest mutual fund distributor in Calcutta. We do this every single day, 24/7, 365. We specialize in handling client queries. All right. So मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूं कि कैसे आपको क्लाइंट क्वेरीज को हैंडल करना है. I will give you 10 examples and then I will talk more about this. Example number 1. Suppose कि आपके किसी क्लाइंट ने पोर्टफोलियो रिपोर्ट की रिक्वेस्ट दी है आपको. Now this is a client query कि मुझे ब्रिजेश please send me a portfolio report of my investments. The answer is that the action should be taken within 1 hour. Now, whatever I am saying, it doesn't mean कि आप 2 घंटे में नहीं भेज सकते, 2 दिन में नहीं भेज सकते. But अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में स्केल हासिल करना है, तो 99% of the time you have to stick to these guidelines, stick to this process, stick to this timeline. And when you do these things, the client becomes addicted to you. He becomes loyal to you. So अगर आपके पास में पोर्टफोलियो रिपोर्ट की क्वेरी आती है, तो आपको 1 घंटे के अंदर में क्लाइंट को पोर्टफोलियो रिपोर्ट भेजना है. बिकॉज क्लाइंट की टेंडेंसी क्या होती है कि अगर उसने कोई सवाल किया है तो उसको इमीडिएट आंसर चाहिए होता है. सपोज कीजिए कि आपने अमेज़न पे कोई किताब ऑर्डर की है, तो आपको इंतजार होता है ना कि किताब कब आएगी ताकि आप उसको तुरंत खोल के पढ़ना शुरू कर दें. या अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां पे आपने अपनी पसंदीदा चीज को ऑर्डर किया, डोंट यू वांट इट शुड कम इमीडिएटली. इट टेक्स टाइम. Okay, 5, 10, 15 minutes is allowed, but if it takes more than that, you still eat that food, but then again your experiences diminish. So action within 1 hour. Next example. Suppose client ने आपको particular account statement मांगा कि मुझे ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए. नाउ आपके पास फोन आया, व्हाट्सएप आया, तो आप क्या करेंगे? आप किसी मीटिंग में हैं, कहीं गए हुए हैं, बट इसके बावजूद भी यू शुड हैव एन एफिशिएंट सिस्टम वेयर यू कैन टेक एन एक्शन विद इन 1 आवर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, एक दिन बाद भी भेजने से क्लाइंट को परेशानी नहीं है, मगर इसको हम कहते हैं नच. नच का मतलब होता है आप क्लाइंट के दिमाग में हावी हो रहे हैं.
हर बार जब आप उसे बेहतरीन सर्विसेज देते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज देते हैं, उनकी क्वेरीज का समाधान निकालते हैं, तो वो अडिक्टेड हो जाते हैं आपकी सर्विसेज के लिए और उन्हें ऐसा महसूस होता है माय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज द बेस्ट। और जब माय डिस्ट्रीब्यूटर इज द बेस्ट देन आई डोंट टॉक अबाउट रिटर्न्स, आई डोंट टॉक अबाउट investing with other people and comparing and competitions. I will give you many examples, just wait with me. Now किसी क्लाइंट ने अगर आपको रिक्वेस्ट दी एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ इंटायर पोर्टफोलियो, किसी क्लाइंट का 25 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो है, उसने 15 स्कीम में इन्वेस्ट किया है और वो कहता है 31 मार्च का मुझे स्टेटमेंट चाहिए। Even today I received a client query. Today is 2nd of January, a Saturday, a holiday kind of thing. मेरे एक क्लाइंट ने आज मुझसे रिक्वेस्ट किया मुझे 31 मार्च 2020 का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। वी प्रोवाइडेड इट इन द नेक्स्ट 1 hour. Here I am giving you the action within 1 to 3 days because it might take some time to organize the account statement of the entire portfolio. But we do it in one single day, maybe a few hours. And you cannot say no to the client. Give him the fastest possible service. Client is looking for returns, but over a period of time, service becomes extraordinarily important for the client and the handling of the queries become extraordinary for the client. He can't wait. Suppose किसी client ने आपसे capital gain report मांगी. You should provide it in one single day. काफी डिस्ट्रीब्यूटर आज जो ज्वाइन किए, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ये रिपोर्ट प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। सो यू शुड हैव a software where you can provide the clients a capital gain report in 5 minutes. It takes just 5 minutes. You don't have to do anything. You just have to click a button, get the report and send it to the client. So यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 day, बट अगर किसी क्लाइंट का रिक्वेस्ट आता है तो आप कोशिश करके उसे 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर में अगर क्लाइंट को कैपिटल गेन स्टेटमेंट भेज देते हैं तो क्लाइंट सेज वाओ my distributor is good, he has the systems, he has the process, resources, he is efficient, she is efficient. So either you do it or you should have a team who can do this. अगर आपको किसी क्लाइंट से नई 5,000 की एसआईपी आने वाली है तो उसको आप डिले कर दीजिए, मगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट को ये सर्विस पहले दीजिए। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। And I want your opinion in the chat box whether all I'm saying makes sense to you or not. Another thing, let me see what is next. Suppose किसी client ने आपसे नए investment का proposal मांगा है. This new investment proposal, the client should get within 1 day. You should not delay by 2 days, 3 days, 5 days, 7 days. Client का interest lose हो जाता है, उसका ध्यान कहीं और चला जाता है. Investment is not the only thing he wants. इसे कहते हैं hit it when the iron is hot. So client ने आज आपसे कुछ SIP के proposal मांगे, investment की proposal मांगे, SWP के मांगे, आज ही उसे एक जबरदस्त presentation दीजिए और उस query को close कीजिए. Don't delay it. Don't do it after 1 day, 2 day, 3 day and 5 day. Example, missed call of client. Of course, you are in a meeting, you are with family, you're doing something else very important, and you miss the call of the client. Now, what do you do? My answer is this: the moment you get free, call the client back. If you get a call on Friday, 3 p.m., and your meeting lasts up to 5 o'clock, don't wait to respond to the client. Friday evening के पहले पहले उसको call return कीजिए. Don't wait that I will call the client on Monday. No. A courtesy call should go to the client immediately, or an SMS or a WhatsApp that I will call you back. And never miss to call back. And call back as early as possible. Now, this is the only exception I have to respond to the client, even if it is 7 p.m. or 8 p.m. or 8:30 p.m. Otherwise, I don't want mutual fund distributors to work beyond 6 p.m. and 7 p.m. But if you have a missed call, no matter what the work the other client is going to tell you, it's a basic courtesy that you call him or her back immediately. Now, I have taken the pain to make this presentation. मैं आपके साथ वक्त निकाल करके इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए. This is very important. In the last 20 years,
Nobody has ever complained to me that Brijesh, you do not call back. In fact, people have given me this compliment that Brijesh, if I call you or message you, it has never happened in 20 years जबकि आपका फोन नहीं आया. अभी एक सिचुएशन में अभी हाल फिलहाल की बात है, मैंने किसी क्लाइंट को कॉल बैक करना 4 घंटे भूल गया. And I'm telling you, this is a real incident, maybe last week or 10 days back. And then that client called me back 3-4 times after 4 hours and he said, Brijesh ji, kya hua? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ. I was in a webinar and I just got delayed for a few hours. And he said, oh, otherwise I thought you always call me back in 30 minutes, 6 or 1 hour. Today it was 3-4 hours and you did not call me back. तो मुझे चिंता हो गई थी. This is the kind of impact you have to create in the mind of your clients. That this is the level of service you give and the care you give to the clients. The returns are secondary, my dear friends. This is what you need to do. WhatsApp message of clients. अगर किसी client ने आपको WhatsApp message भेजा है, don't ignore that message. Reply and acknowledge immediately. कई बार ऐसा होता है ना, आप ऊपर से स्लाइड करके क्लाइंट का मैसेज पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कि जब फ्री होंगे देखेंगे तब करेंगे. डोंट डू दैट. ट्राई टू सी द मैसेज इमीडिएटली. उससे क्लाइंट के दिमाग में एक मैसेज जाता है दैट यू हैव सीन द मैसेज एंड उसको उसी समय एक वर्ड दो वर्ड का मैसेज टाइप करके भेज दीजिए. इफ यू आर बिजी, आई विल कॉल यू बैक, आई विल रिवर्ट बैक, ओके आई विल डू द नीडफुल. Reply and acknowledge immediately. Don't send him a reply after 2 hours, 3 hours and 4 hours. Just imagine human behavior. जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं, what do you expect? You expect a reply immediately. You again and again go back to that client's WhatsApp message or your other relationship and you see whether that person has checked that message or not. आप ये कोशिश करते हैं कि ब्लू टिक लगा या नहीं लगा. आपको ये अच्छे से मालूम है कि वो बंदा हर 15 मिनट में आधा घंटे में अपना व्हाट्सएप चेक करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ब्लू टिक नहीं किया. इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटेंट में गलती है कि वो आपका मैसेज पढ़ना नहीं चाह रहा है या वो दिखाना चाह रहा है कि वो व्यस्त है और इससे आपको हर्ट होता है, आपको तकलीफ होती है और यही काम आपको अपने क्लाइंट्स के साथ नहीं करना है. अगर आप उनका मैसेज तुरंत पढ़ के जवाब दे देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री बैठे हैं. लेट देम थिंक व्हाट दे हैव टू थिंक, बट यू डू योर जॉब एंड दे आर योर क्लाइंट, दे आर पेइंग यू, दे आर रनिंग योर फैमिली, दे आर पेइंग फॉर योर गैस एंड सो यू हैव टू एक्ट वेरी क्विकली, वेरी फास्ट. एक्शन, रिप्लाई, एक्नॉलेज इमीडिएटली. नाउ सम मोर एग्जांपल्स. सपोज कीजिए कि क्लाइंट्स आरबीआई बॉन्ड्स के बारे में जानना चाहता है. आप आरबीआई बॉन्ड में डील नहीं करते और इंटरेस्टेड भी नहीं है बिकॉज हो सकता है आपको कमीशन पसंद नहीं है या आपको लगता है ये प्रोडक्ट सही नहीं है. बट इसके बावजूद क्लाइंट ने आपको फोन करके बोला है, व्हाट्सएप करके बोला है कि मुझे आरबीआई बॉन्ड के बारे में जानना है. व्हाट डू यू डू? माय आंसर इज दैट प्रोवाइड आरबीआई बॉन्ड डिटेल्स द सेम डे और नेक्स्ट डे टू द क्लाइंट इन द राइट मैनर. एक बैनर भेज दीजिए, 5 लाइन का डिटेल्स भेज दीजिए या एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भेज दीजिए. दीज आर द फीचर्स ऑफ आरबीआई बॉन्ड. वेदर द क्लाइंट इन्वेस्ट और नॉट, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग दीज इन्वेस्टमेंट्स और नॉट, बट क्लाइंट का मैसेज आया है, he wants to know something and he has called you, you need to do it immediately. You cannot delay it by 3 days and 5 days and 7 days. कई बार ऐसा होता है कि हमें इंटरेस्ट नहीं होता है इसलिए हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. ये गलत है. ऐसे क्लाइंट चले जाएंगे, रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा. यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड टू सच थिंग्स. अनदर सिचुएशन. क्लाइंट के बैंकर ने एक इंश्योरेंस प्रपोजल भेजा है और वो चाहता है कि आप उसके प्रपोजल को रिव्यू करके उसे सजेशंस दें. Action point. Provide your suggestion within 1 day. If you have to miss some meetings, if you have to miss some business, if you have to stop something else which you are doing, that's all right. But existing client की कोई requirement आती है या नए किसी client का कोई request आता है, handle it immediately. Now this is again called a nudge. Client will feel happy about it. They will feel elevated. उन्हें लगेगा मेरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मुझे समय से रिस्पॉन्ड करता है, मुझे मेरी इज्जत करता है और फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा क्या होता है
आफ्टर 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स अगर उस क्लाइंट के दिमाग में कुछ और चल रहा है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उसके दिमाग में सिर्फ आपका नाम आएगा कि ये क्वेश्चन है किससे पूछूं। तो वो पिछले 2 साल की हिस्ट्री सोचेगा कि किससे बात करने से उसको रिस्पॉन्स फास्ट मिलता था। अभी उसे 5 लाख का नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में आपका नाम आएगा, बिकॉज हर बार आपने उसे बहुत फास्ट आंसर दिया है, उसकी क्वेरीज को समाधान किया है, और वो ऑब्लिगेशन फील करता है, वो एक लॉयल्टी फील करता है, वो एक जिम्मेदारी फील करता है कि आपने लगातार उसे अच्छी सर्विस दी है। लेट्स गिव दिस बिजनेस टू दिस पर्सन। कई बार ऐसा होगा कि 100 में से 10-20 क्लाइंट इस बात को नहीं समझेंगे और वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं देंगे, कोई बात नहीं है, बिकॉज हर क्लाइंट से आपका बिजनेस हो भी नहीं सकता। यू डू व्हाट यू हैव टू डू द बेस्ट विच इज अंडर योर कंट्रोल। ऑलराइट, a few more things and then I am done. Clients want his or her PPF account to be shifted from Guwahati to Kolkata. Now, this is a very typical case, and you have no idea how to do this. आप PPF में डील करते हैं, नहीं करते हैं, बैंक्स के साथ करते हैं, आपको कोई कमीशन नहीं मिलती है, और ये आपकी सर्विसेज में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन किसी क्लाइंट ने आपको, एग्जिस्टिंग क्लाइंट ने, ऑफ कोर्स शायद नए क्लाइंट्स का आप इस काम को शुरू में ना करें, मगर किसी एग्जिस्टिंग क्लाइंट की ये रिक्वेस्ट आई है, वो छोटा क्लाइंट हो या बड़ा क्लाइंट हो, उस केस में भी आपको, यू मस्ट फाइंड आउट द प्रोसेस एंड गेट इट डन। दिस इज माय सजेशन। क्लाइंट्स अपनी जिंदगी में कभी भी इस बात को भूलेगा नहीं। अगेन, 2-4 क्लाइंट भूल जाएंगे और आपको रिस्पॉन्ड नहीं देंगे और आपके पास नया बिजनेस नहीं आएगा, दैट इज ऑल राइट। But if you give this service to a client, it is most likely that client will understand कि उसने, उसकी किसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया है, और वो उसका रिवॉर्ड आपको कभी ना कभी देगा। Now, if you think it doesn't happen, then it is your call. It is my experience. It happens. This is the way the world functions. And if you don't believe in this and you want to have a very choosy situation that इस client को सर्विस देंगे, इस client को सर्विस नहीं देंगे, तो कई बार एक छोटा क्लाइंट बड़े क्लाइंट का रेफरेंस दे सकता है, वो आपको नहीं मिलेगा। Clients want nominee change in one of his or her investment through other broker. कई बार ऐसा होता है ना, ये हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम इसकी सर्विस नहीं देंगे, इसको आप हमारे कोड पे ट्रांसफर कीजिए, फिर हम देंगे। हम कंडीशंस लगा देते हैं क्लाइंट के सामने। नेवर मेक अ कंडीशन व्हेन द क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग यू समथिंग। ऑलवेज से यस एंड गेट इट डन। डोंट मेक हिम अ कंडीशन कि पहले आप इस इन्वेस्टमेंट को मेरे कोड पे चेंज कीजिए या रिडीम करके मेरे साथ लगाइए, तब हम आपको ये सर्विस देंगे। क्लाइंट्स आर पुट ऑफ बाय दिस। वो कुछ बोलेंगे नहीं आपको, लेकिन ये काम वो आपको करके नहीं देंगे। They will get it done with their existing distributor or somebody else, and they will not request you this. The idea is कि आप क्लाइंट को ऐसी सर्विस दीजिए कि अगली बार वो फिर आपसे सर्विस मांगे, और फिर उनको सर्विस दीजिए, उनकी क्वेरी का समाधान कीजिए, और वो फिर आपसे क्वेश्चन करें। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जब उनके दिमाग में, उनके परिवार के दिमाग में आपके अलावा कोई नाम ही नहीं आएगा, और उस दिन आपको वो एक बड़ा चेक देगा, क्योंकि you have been servicing that client over the last 1, 2, 3, 5, 10 years. Another example, LIC policy of client taken from other advisor has matured. She wants you to complete the maturity formalities. All right. Action is that even if you don't get paid, and never ask the client money to do this, 500 or 1,000 or 5,000 rupees, never charge a client for these small things. आप 1,000, 2,000, 5,000 लेकर के बड़े नहीं बन सकते इस बिजनेस में। You have to get a client's loyalty for 20 years and hope that 1 out of 2 clients becomes big with you in the next 20 years. And unka 2, 4, 5, 10 crore ka EM on, you make 5 lakh rupees every year. That should be the target. To earn 5,000 rupees by giving small services here and there will not get you big business. And again, either you take experts' advice into this, or you try to do it your own way. My suggestion is this: that मैंने पिछले 20 साल का experience देखा है, it doesn't work to charge a client 100, 500,000 rupees to get his work done. Now, the whole idea, my dear friend, is this: that you should have a good team
as quickly as possible to give all these services to the client. If you are alone, then also you should give these services to the client. Your business will grow faster. Client got a PMS investment proposal. He wants you to review it. The action point is say yes, review, and revert within 1 day. Whether you want him to invest or don't invest, that's a different point. But client ने आपसे कुछ पूछा है, उसका जवाब उसको तुरंत चाहिए. आप कितने बिजी हैं इस बात से कोई मतलब नहीं क्लाइंट को. और यहां मेरी एक और एडवाइस है. नेवर एवर टेल अ क्लाइंट दैट यू आर बिजी. ये जो वर्ड बिजी होता है ना, इसको आप अपनी डिक्शनरी से काट दीजिए. आपको कैसा लगता है जब कोई बंदा आपको ये कहता है कि आई एम बिजी? डू यू फील नाइस? टेल मी इन द चैट बॉक्स. अगर आपने किसी से कोई रिक्वेस्ट किया है और वो कहता है मैं बिजी हूं, डू यू लाइक इट? Yes, so many people are saying no. Then you should never ever use this word that I am busy. Never to a relationship manager who wants to meet you. Never with an AMC people, never with anyone. The best that you can do in situation where you're actually busy, then you should use, I am a little tied up. Can I take it up later? Busy word is a very arrogant word. Never use it. जो चीज आपको पसंद नहीं, आप अपने क्लाइंट के साथ नहीं कर सकते. Now client has equity shares of XYZ company, okay, and dividend not received due to some issue. He wants you to check it and help in getting the dividend. And this client is maybe worth 3 lakh rupees of AUM with you, जिनसे आप 1,000-1,500 रुपए साल का कमाते हैं, but he has potential. My action point is say yes and get the job done. इससे दो फायदे होंगे. पहला, जब आप क्लाइंट को यस कहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता है वो काम करने का जो आपको आता नहीं. एक बार अगर आपने इस काम को सीख लिया तो अगले बार क्लाइंट की जब भी एक क्वेश्चन आएगी किसी भी क्लाइंट की अगले 20 सालों में, तो यू विल नो हाउ टू गेट दिस डन and you can teach your people how to get this done, and then it will become your natural process that okay, I can do it very fast and quickly. So in fact, it is the client who is helping you know more and learn more. By saying no, you are closing that door that I don't want to learn. And when you do these kind of things with the client, you give this kind of solution on his queries and services, he becomes indebted to you. और अगर अभी इस बात से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में ये बात आती है कि ब्रिजेश ऐसा नहीं होता है, काफी क्लाइंट ऐसा नहीं सोचते हैं, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी मानसिकता नेगेटिव है और आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में आगे नहीं बढ़ सकते. ये मैं अभी वेबिनार में इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं आपको देख नहीं रहा, मुझे मालूम नहीं कौन क्या सोच रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा अपफ्रंट होकर इस बात को कह सकता हूं. आपको पॉजिटिव तरीके से बिजनेस को करना है. You have to be very, very positive, right? Before saying no, of course, sometimes you might have to say no, but you have to get through the gist of this program, my concept of this program, that become a yes person for the client. And the price of this saying yes is very, very high in the future years. You will get a lot of business with the client because of saying yes. Golden rule. Clients must never need to follow up with you. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी भी क्लाइंट का कभी भी आपके पास फोन आए कि मेरा काम नहीं हुआ, मैंने आपको ये इंक्वायरी दी थी, इसका जवाब नहीं आया. कभी कभी 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना भी आपको किसी काम में लग सकते हैं, लेकिन क्लाइंट का फॉलो अप नहीं होना चाहिए. आपको लगातार क्लाइंट को कहते रहना है वी आर ऑन टॉप ऑफ द बिजनेस वर्क, वी आर लुकिंग इनटू दिस, वी आर टेकिंग मोर टाइम एंड वी विल गेट इट डन. ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जब क्लाइंट आपको फोन करके या ईमेल करके बोले माय वर्क इज पेंडिंग. अगेन थिंक अबाउट दिस. जब आप किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट किसी और से लेना चाहते हैं और वो आप पे ध्यान नहीं देता और आपको फॉलो अप करना पड़ता है, तो आपको कैसा लगता है? द क्लाइंट ऑल्सो फील्स द सेम थिंग. You don't want to deal with that person again. You don't want to have a big relationship with that person who is not doing the job on time. So his her job request must be attended, completed before
reminder from the client. This is the golden rule. Now, finally, it averages out. Many times, when you get an investment check of rupees 25 lakhs, it is not because you made a lot of effort on this proposal. Do you agree? It is because of so many other services you gave to the client over the years. Do you agree with this or not? So it averages down. कुछ क्लाइंट आपकी सर्विसेज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे और कुछ क्लाइंट आपकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करके बड़ा बिजनेस देंगे, एवरेज आउट हो जाएगा. एंड यू डोंट नो कौन से क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, सो आपको सारे क्लाइंट के साथ सर्विसेज को बराबर रखना. Finally, the last two slides, make your clients addicted to your fast and accurate services. This is the single biggest factor in an MFD's growth. It makes them comfortable with you. I will give you a personal example. I have a client for last 18 years, and he is a very big client, very knowledgeable person. Maybe he knows more than me how mutual funds operate. He knows about direct, indirect, regular commissions, which I get, and everything. And many times वो मुझसे कहते हैं, ब्रिजेश इस फंड में इन्वेस्ट करना है, यहाँ से प्रॉफिट बुक करनी है, और मैं उनके ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर देता हूँ. फिर मैंने उनसे एक दिन बोला, आपको सब कुछ आता है, फिर आप खुद से क्यों नहीं कर लेते? हंसी मजाक में एक अच्छा डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने ये बात बोला. उन्होंने जवाब क्या दिया? हंस करके उन्होंने बोला, ब्रिजेश पैसे ही सब कुछ नहीं होते, कोई बात करने वाला भी तो चाहिए. आई लाइक टॉकिंग टू यू. And he has crores of investment with me just to talk to me. He feels comfortable with me. बिकॉज उसकी कोई भी क्वेरी होती है, वो मुझे फोन करके मैसेज करके बोलता है, और मैं उसको रिस्पॉन्स देता हूँ पिछले 18 सालों में. एंड देन ही हैज बिकम सो लॉयल टू मी. ही फील्स दैट ब्रिजेश विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग टू मी, एंड दिस कंफर्ट इज वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज. एंड अगर ऐसे 10 क्लाइंट भी आपके पास हो जाते हैं 20 साल में, तो जितनी भी सर्विसेज आपने 100 क्लाइंट को दी है पिछले 20 सालों में, सबका वर्थ आपको मिल जाएगा. Comfort plays a big role in making them loyal. Don't ask any question. Never say no to a client. Always say, yes, I will get it done. Sometimes you will make big money. Sometimes it will take you 2 days to learn that thing, make an effort, study, and respond to that client, and nothing happens. That's all right. He's making you learn. So, this is all, my dear friends, which I have to talk to you.